This conference will now be recorded. या अली मदद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली अल्लाह मदद फरमा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। 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 वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन 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 वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। शुक्रन लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। या अली मदद अजीज सर। या अली मदद, बहुत खूब, बहुत खूब। We did not send him but as a रहमतुल आलमीन, हमने उनको नहीं भेजा मगर रहमत के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तमाम साथियों को या अली मदद। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने फरामीन की वीकली सेशन को मौला के मुबारक नाम से आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम, हाजिर इमाम। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, मदद फरमा। अल्लाहुल कय्यूम, अली अल्लाह, अल्लाहुल कय्यूम, अली अल्लाह, मदद फरमा। नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम, हाजिर इमाम। तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी मौला, तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी मौला। या मौला मदद फरमा, अल्लाहुल कय्यूम, अली अल्लाह, मदद फरमा। या मौला रहम कर, करम कर, फजल कर। Today we will continue on the Farman, and the Farman selected for today is Chattanooga, Eastern Pakistan, December 4, 1964. It is the Bezal Khyal Farman. Please recite the Holy Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. मौला अपने बेतुल ख्याल के फरामीन में फरमाते हैं, Imam guides not only about the exterior duties of the Islam, but also the matters pertaining to the heart and soul. इमाम न सिर्फ इस्लाम के अंदर जो ज़ाहिरी फर्ज है उसको समझाता है, उसकी तरफ दोनों इनायत फरमाता है, बल्कि जो हमारे दिल और हमारी रूह के लिए जरूरी है उसके लिए भी। अब कुछ देर के अंदर इंशाल्लाह यहाँ पर जो दिल का अल्फाज है उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। I want you to concentrate on carrying in
heart, light and happiness. मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में रोशनी और खुशी को रखें. This is essential to real understanding of Islam. और ये बहुत ही जरूरी है इस्लाम के अंदर और इस्लाम को समझने के लिए. नाउ यहां पर दिल किसको कहा गया और क्या समझना चाहिए हमको. आप में से वो साथी जो काफी अरसों से फरामीन को पढ़ते हैं और फरामीन के माने निकालने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये बात शायद नहीं हो. नहीं से मतलब नो नहीं, न्यू हो. For those who have been reading Farman and trying to understand the Farman for a long time, what I'm about to say, it may be a new thing and understanding for them. And we are talking about the word heart. तो सबसे पहले हम देखें कि दिल जो जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथरा और सेंट्रल ऑर्गन है हमारे जिस्म को चलाने के लिए, ब्लड की सप्लाई के लिए, जहां पर आकर तमाम गंदा खून साफ होता है और फिर दोबारा से जिस्म के अंदर लौटाया जाता है. दिल ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां पर रोशनी रह सके या खुशी रह सके, लेकिन चूंकि एक मावरतन हम कहते हैं कि दिल से सोचो, दिल से काम करो, दिल को खुशी हो. The heart, one of the organ in human body, is nothing but a central point in our body which cleans all the blood and then re-supply the clean blood to the body. Otherwise, this piece of meat organ cannot carry the light or the happiness. But in our daily language, in the examples we use, why don't you work with your heart? Put your heart into your work. Think with your heart. Heart is a place of emotions. Those are the words that we use normally. But when we say, why don't you think with your heart or put your heart into it, what we are really saying is, put your mind to it. Work with your intellect. हम दरअसल क्या कह रहे हैं कि आप अपने काम में अपना ध्यान लगाएं, ध्यान के साथ काम करें, ध्यान के साथ सोचें. पर मावरतन हम अल्फाज दिल यूज करते हैं और उसका रीजन ये है कि कुरान के अंदर जब कल्ब का वर्ड यूज किया गया तो कल्ब के मानी दिल भी होते हैं और दिमाग भी होता है. Because in the Quran and in our literature,
when they use the word qalb, it is used for the heart and mind. Heart, a place of emotion, and the mind, a place of thinking regarding those emotions. Now, if we come back to this Farman, Imam says it means and it pertains to matter of heart, the intellect, and the soul. And then there is a light and happiness for the heart, the intellect, and the soul. अगर ये पार्ट हम समझ गए हैं तो हमारे लिए फरमान को समझना आसान होगा और सवालात खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 7 सालों के अंदर काफी लोगों ने ये सवाल किया कि जब मौला फरमाते हैं कि दिल और रूह, तो इसका क्या मतलब है, क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? In last 7 years or so, we have received and heard a question, not one time but many times. When our Imam says heart and the soul, are we talking about two individual things, or are we talking about one single fact? And another surprising answer to some. Those who have been listening to these sessions for a long time with this Garib and Nachis probably already know the answer. आप में से वो लोग जो नाचीज को काफी अरसे से सुन रहे हैं, शायद ये बात जो अब मैं बताने जा रहा हूं, और ये भी एक नई बात होगी आपके लिए कि हमारी रूह की रूह, देखें, एक हमारे जिस्म की जान है जो हमारी रूह है। कभी आपने पूछा कि हमारी रूह की रूह क्या है, यानी कि हमारी रूह की जान क्या है? हमारी जान की जान हमारी रूह है, हमारी रूह की जान अक्ल है। The soul to our body, the reason our body is called alive and running is due to our soul. But have we ever thought what runs our soul? Our soul is run by intellect, meaning the soul of our soul, the Jan of our Jan is intellect. Now think about that for a second. If we connect our soul to universal soul, then universal soul is run by universal intellect. Universal soul की जान जो है वो universal intellect है. Now that would help and make it easier for us to understand what is the soul of our soul. हमारी रूह की जान क्या है? जिस तरह हमारी जिस्म की जान हमारी रूह है, इस तरह हमारी रूह की जान हमारी अक्ल है। यानी कि अक्ल हमारी रूह को जिंदा रखती है और हमारी रूह हमको जिंदा रखती है। It is the intellect due to which our soul is alive, and our soul is the reason that our body is alive. I think this is good enough understanding. Let's move forward into our actual Betul Khayal Farman regarding the bowl.
Keep this understanding because this will help us understand the rest of the फरमान. आप इस बात को याद रखना क्योंकि ये हमें मदद करेंगी बकिया फरमान समझने में. Mullah says, I would like my spiritual children to understand that most of you have worldly matters. This you should not have in concentration. बहुत ही अजीब लेकिन कलीदी फरमान है. Very strange thing to say, but a principle Imam is giving us. और वो क्या है कि दुनिया का काम तो सब ही करते हैं लेकिन आपका ध्यान वहां पर ना फंसा दें. Everyone has the matters of the world, but do not get your mind stuck, completely devoted to the worldly matter. Do not do that. You should not do that. In other words, क्या बोल रहे हैं मुला कि आप दुनिया के काम में अपना दिल ना लगाएं. देखा कितना जरूरी था ये दिल को समझना कि आप दुनिया के कामों में अपना दिल ना लगाएं. Do not keep your heart into the worldly matter. Do not concentrate. Don't concentrate completely. Don't devote your mind into worldly matters. So where do you concentrate? आप अपना दिल कहाँ लगाएं? Mullah says, this is not the essence because the world is not the essence. Worldly matter is not the essence, the reason for our life. क्योंकि दुनिया जो है वो उसका मुद्दा नहीं है. हमारी जिंदगी का जो मुद्दा था वो दुनिया नहीं था. हम इस दुनिया में दुनिया चलाने के लिए नहीं आए हैं. The essence is the soul. आपका जो मुद्दा है, रीजन है दुनिया में आने का, the essence and the reason of coming to this world was not the matters of the world but the matter of the soul. The essence is the soul. हमने उसको उल्टा कर दिया. जो चीज जरूरी थी और जो दुनिया में आने का मकसद था वो हमारी रूह और रूहानी तरक्की था. हमने अपना सारा ध्यान, अपना दिल दुनिया के अंदर बांध दिया. That was not the reason दुनिया में आने का. That was not the reason. He who forgets the soul is unhappy. और वो जो अपनी रूह को भूल जाता है, excuse me, वो जो अपनी रूह को फरामोश करता है, वो जो अपनी रूह को भूल जाता है, the one who forgets and ignore. I wanted to use this word because I don't think we forget our soul. I think we ignore our soul. You know, in the questioning at the end of the time, there is one question and one complaint which will be filed against us. You know who that would be and what the complaint would be? जब हम मर जाएंगे ना तो एक सवाल हमसे जरूर पूछा जाएगा और वो भी एक कंप्लेन के तौर पर. पता है कि वो कंप्लेन कौन करेगा और क्या करेगा? Our soul will complain against us that why did you
bury me, ignored me, alive in your body. तुमने मुझे किस जुर्म में अपने जिस्म के अंदर दफना दिया और कंप्लीटली इग्नोर किया. Read this ayat in Quran. Find this ayat in Quran. If you keep this ayat, if you keep this learning, this understanding every morning in your heart, every night in your heart, अगर आप इस एक बात को सुबह और शाम अपने दिमाग में रखेंगे, I don't think you will ever be able to forget the इबादत. आप कभी भी इबादत को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी रूह आपको टोकेंगी, आपको याद दिलाएंगी, आपको झंझोड़ेंगी. Your soul, if you remember this part, your soul will not let you sleep without ibadat. Your soul will shake you and wake you, remind you that do not ignore me. I was the purpose for your life. She will remind you of that. आपकी रूह आपको याद दिलाएंगी कि दुनिया में आने का मकसद मैं थी, ना कि दुनिया. हमारे पुराने वाइज़िन अपनी बहुत ही अच्छी गुजराती में ये वाइस सुनाते थे हमारे बचपन में कि इंसान की एक सोकन है और वो दुनिया है. इंसान की पहली ऑब्लिगेशन उसकी रूह है, जो उसकी बीवी है, जिसका उसको ध्यान रखना है, और दुनिया उसकी सोकन है. दुनिया is the mistress of a man. He pays attention to the mistress and not to the wife, the soul. ये हमारे पुराने जमाने में हमारे जो अच्छे बुजुर्ग वाइजीन होते थे, वो इस तरह से हमको समझाते थे. Maybe funny to some, but how true this is, that we completely ignore the soul in us and we love the world and worldly matter. And how beautifully example our elder Buzruk Waisin had taught us. And this was in our good old days when we were young and our wives would be in Gujarati. Inshallah, the essence is the soul. He who forgets the soul is unhappy. जो अपनी रूह को भूल जाएगा वो हमेशा नाखुश होगा. This you will see every day around you. There would be many people, they may be rich and they think they are happy, but real happiness is not there. वो लोग जो अपनी रूह को फरामोश करते हैं वो कभी भी खुश नहीं होते हैं, चाहे वो कितने भी पैसे वाले हो, चाहे वो कैसा भी समझते हो कि पैसे की वजह से हम खुश हैं, लेकिन हकीकत में जो खुशी है उसका तो उनको पता ही नहीं है और वो खुशी कभी भी उनके पास नहीं होती है. This is why my spiritual children should understand, do not forget your prayers and your ibadat. इसलिए जरूरी है कि मेरे रूहानी बच्चे इस बात को याद रखें कि जिंदगी में कभी भी अपनी दुआ और अपनी इबादत को ना भूलना. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये सबसे ज्यादा जरूरी है. आपकी दुनिया, आपकी हर चीज से, आपकी जितनी भी जाहिरी चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी
आपकी दुआ और इबादत है. This is the most important, Mullah says. And when you sit for ibadat, you should forget worldly matters. Now, this one part requires some understanding, because I'm sure at the end, someone may even ask the question, how do we do that? I'm not able to do that. Someone may ask the question, how do we do that? And I'm not able to do that. Your answer is sitting right here in this line. This is your answer. The reason our world, our worldly thoughts does not leave us and bother us in our ibadat. The very reason Imam mentioned above. And that is right here. This you should not have in concentration. Because all day long, almost 23 hours a day, even while we are sleeping, we are thinking of dunya, dunya, dunya. Because we had made the worldly matter the center, essential, and the point of concentration. And what do you think? We are a machine? Then all of a sudden, after 23 hours, we're going to turn off the machine and we're going to turn the other machine on and we will be in the ibadat. No, my brother and sister, we are not machine. Because all day long, we had completely concentrated on worldly matter, which was not essential, which was not important, which should not have been the center of our daily activities. Therefore, you are not able to let go of those thoughts. You see, the question is there and the answer is there. Mullah is telling us what not to do so you be able to concentrate. So Mullah say you should forget worldly matters. कभी सुबह को 4 बजे, yeah, he's talking about as a wholesale all the time, because we can do worldly thing. काम करना है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करना है, लेकिन अपना दिल दुनिया में बांधना नहीं है. We must work for living, for the family, but do not tie your heart and soul into the world and worldly matter. No one is asking you not to work, but do not tie your thoughts and your heart into the worldly matters. Even while you are working, remember him. Remember your Ismi Azam. And you can do that. You can multitask while you are working. In your heart, you should remember your Ismi Azam all the time. If you do that, try practice for 7 days and watch, your ibadat will change. Only 7 days. Our Buzurg have said 40 days. 40 days may sound like too much because we may not be able to live without our beautiful worldly matters. How about we try for 7 days and see if your ibadat changes? You will be able to concentrate. You will be able to focus. आप 7 दिन ट्राई करें. हमारे बुजुर्गों ने 40 दिन की बात की है, लेकिन आपके लिए दुनिया की खूबसूरती को 40 दिन तक छोड़ना शायद मुश्किल हो जाएगा. तो नाचीज आपसे दरखास्त करता है,
आप 7 दिन कोशिश करें और देखें कि अगर 7 दिन तक आप अपने इसमें आजम को कॉन्स्टेंटली पढ़ते हैं दिन रात, आपकी इबादत में फर्क आएगा, आपका ध्यान इबादत में लगेगा। कोशिश करें, देखें, it inshallah will benefit you. You should sit with open heart and concentrate on bowl. याद रखें हार्ट का मतलब क्या है. Remember the meaning of the heart. Keep your mind open. Let the light and the happiness sink in. आप अपने दिमाग को खुला रखें और रोशनी और खुशी को अपने दिल व दिमाग में आने दें. I would like to draw a picture for you. मैं आपके सामने एक तस्वीर बनाना चाहता हूं. अगर आपके दिमाग में दुनिया 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 है, if in your heart and mind is nothing but money, world and worldly matters, there is no room for light and happiness. फिर आपके अंदर नूर को जगा और खुशी को जगा देने के लिए कोई जगह ही बाकी नहीं है. Let it go. Empty it out. Keep your heart and mind open. Let the noor and happiness sink in. And in the past, you would have remembered the example. Take the glass of water. Take an empty glass. Pour the water into this one. ये पानी जो है ग्लास में वो दुनिया है, उसको निकाल दे बाहर. Now you have this empty glass in your hand. What do you think is in the empty glass? ये मिसाल है आपके दिल और दिमाग की. आप दुनिया को निकाल देंगे ना तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर हवा आ जाती है, आपको डालनी नहीं पड़ती है. If you let the worldly matters and the love of the world go, the noor and the happiness like a air in the empty glass will come into your heart and mind. नूर और खुशी खुद ब खुद, वल्लाह आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद आपके अंदर समा जाएंगे. लेकिन हम किसी वजह से दुनिया के अंदर इतने मशगूल और मोहब्बत में है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं. For whatever reason, we are so busy and so much in the love of the world that we are not able to let it go. And therefore, the light and the happiness is waiting, waiting, and waiting. All right, let's see if we can finish this Farman today. Many Muslims have forgotten the meaning of ibadat. Remember, this Farman is for you and me, not other than Ismaili Muslim. याद रखें कि ये फरमान आपके लिए और मेरे लिए है, ये दूसरे नॉन इस्माइली मुस्लिम के लिए नहीं है. I know sometimes whenever there is a negative, we always thought of others. We never apply them to ourselves. ये आपकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है कि बहुत मर्तबा हम इबादत भूल जाते हैं. Many Muslims have forgotten the meaning of ibadat. If you read history, you would come to know how Muslim could do so much in the Prophet's time. This is so because they used to perform ibadat. अगर आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ेंगे
तो आपको पता चलेगा कि हम मुसलमानों ने कैसे कैसे काम किए। उसकी एक ही वजह थी, क्योंकि हम इबादत करते थे। अगर आज भी आप करो तो आप बड़े बड़े काम कर सकोगे। This is because they used to perform ibadat. Our life is not guided by Islam, but influenced by other faiths and worldly matters. क्योंकि शायद हमारी जिंदगी आज एथिक ऑफ इस्लाम से गाइड नहीं हो रही है, बल्कि हमारे ऊपर जो असर है वो दूसरे के फेथ का है और दुनिया के बातों का है। Very important line. If you did not understand, please ask. This is very important. For whatever reason, our life is not guided by the Islam, by the ethics of Islam, but influenced by other faiths. क्योंकि दूसरे मज़ाहिब के अंदर इबादत बंदगी नहीं है और उन्होंने जमात खाना और दुआ को छोड़ दिया है, अब हम उसके असर में आ जाते हैं और दुनिया के कामों के अंदर फंस जाते हैं। Because we have taken the influence from the others. We are talking about us Ismailis, because this Farman is not for anyone else but you and me. We are not guided by the Islam and the ethic of Islam, but influenced by other faiths. हम भूल गए हैं हमारे मजहब को और दुनिया के कामों में फंस गए हैं। We have forgotten our faith and we are getting influenced by the others and the worldly matters. Don't let that happen to you. Don't let it happen to you. If you lose this key, खुदा ना खास्ता अगर आप इस चाबी को घुमा देते हैं, God forbid, if you lose this principal key, the faith and the ibadat, the key of Isme Azam, it will be hard for you. फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है. It will be really hard for you. Hard to do what? To ever see and receive Nur in this lifetime. To ever have happiness in this lifetime. The very happiness that Imam wish for you to have. वो खुशी, वो नूर जो इमाम चाहता है और दुआ करता है आपका हो, लेकिन अगर आप अपने हाथों से इस चाबी को घुमा देते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा. It would be really hard. You will be able to face them, and if you have any problem, you will be able to face them. If you achieve success, you will feel, I have done this is not the case. Now, one other point. Imam says, but if you have ibadat, if you have the light and the happiness, then if you have any worldly problems or spiritual problems or intellectual problems, you will be able to face them. You will be able to handle them. अगर आपके पास ये नूर और खुशी होगी तो कोई भी मुश्किल सामने आए, चाहे वो दुनियावी हो, दीनी हो, रूह की हो कि अकल की हो, आप तमाम को आराम से हैंडल कर सकेंगे. लेकिन one warning, when you have that nur, that happiness, do not think this was your doing. Be careful कि जब आपके पास ये हो तो ऐसा ना समझना कि ये आपका करना धरना था. When you ask for a mushkil asan and mushkil moves away, like you are moving mountain with your hand, like this. Imam says, I'm not saying that. You will be able to move the mountains
of the problems like this. But when you are able to do that, if you have the nur and the happiness of the nur, you will be able to do that, but do not give yourself a credit for that. Don't think this is you who have done it. It is not you, but the Imam have done that. The very last paragraph before we end, this should be taken very, very seriously. And I recommend this to you, and you will find real happiness from this. आप इस बारे में सोचें, संजीदगी के साथ सोचें और इसके अंदर संजीदगी इख्तियार करें. मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप ऐसा करें और इंशाल्लाह आपको इसके अंदर रूहानी खुशी मिलेंगी. Take this seriously. Take Imam's recommendation for you. And what is that? Take it seriously. If you do that, you will find the Nurani spiritual happiness in you. If my spiritual children lose this, Khuda na khasta, my spiritual children lose this, they will no longer understand the meaning. अगर आपने इस बात को घुमा दिया, भूल गए, इसमें आजम को संजीदगी से नहीं पकड़ा, तो मौला फरमाते हैं कि फिर इसकी समझ और ये खुशी उसके मानी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी. It would be hard for you to understand if you lose the understanding, the key to this happiness, this may azam. We do not believe only in dua or understanding of its meaning. खाली दुआ पढ़ के खुश नहीं हो जाना है. खाली दुआ पढ़ के हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं. दुआ तो फर्ज है, वो तो कर्ज है, वो तो आपको जो दुनिया में जिंदगी मिली है ना, 2-4 दिन मिले ना, उसका शुक्राना है दुआ. वो तो कर्ज है, वो तो आपको देना ही है. The 4 days, the breath, the life that we have received, the borrowed time, with dua, we are paying it back. That is a loan that we must pay back. वो कर्ज है, उसको तो चुकाना ही है. But it is not the dua with which you will rise to the highest level. It is not. खाली दुआ से काम नहीं चलेगा. But strength in life which you will get from ibadat. इबादत के अंदर से आपको ये पावर मिलने वाला है. It is the ibadat which will give you that strength to face the difficulty, to be able to move the mountain, to be able to move forward. This is essential part of the faith. और ये सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है हमारे तरीके का, आपके ईमान के लिए. Remember this link with me to have light and happiness. ये आपको आपके इमाम के साथ जोड़ता है. इसमें आजम is a link between a mu'min and the imam. आप समझे इसका क्या मतलब है कि आपके और आपके इमाम के दरमियान में एक पाइपलाइन है. उस पाइप से आपको नूर और खुशी आने वाली है. अगर आप उस पाइप को तोड़ दिया, छोड़ दिया, भूल गए, तो वो पाइप से जहां से नूर और खुशी आने वाली थी वो चले जाएंगी.
There is a pipeline, a link between a mu'min and the imam, murshid and the murid. If you lose that pipe, if you misuse or forget or remove the link between you and the imam, then how will you receive the nur and the happiness? Isme Azam is the link. Ibadat is the practice with which Imam will give you the light and the happiness that he wished for you to have. He wants you to have that. Otherwise, why would he even give you Isme Azam? He wants you to have that. Inshallah ta'ala, please recite the Holy Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Let's stop here. Now, if you have any comments or question, please do ask. Subhanallah, sir, Subhanallah. Friends, please share your questions in the chat. Sir, at this time, we don't have any questions. If any friends have any questions, please unmute your device. याली मदद या अली मदद। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है ये ईद मिलाद बिन नबी है, उसके बारे में है जो कल मैं गिनान सुना था कि 7 स्वर्ग ना खुलिया से द्वार, तो ये 7 स्वर्ग क्या है प्लीज? अच्छा सवाल है, even though it's not related to today's subject, but let me give you a short answer, then you still have the question. 130 session, which is regarding the religion, you can ask about that. This session is about the bowl and Isme Azam, but a very good question. The 7 heavens. 7 heavens are the living 7 heavens in the Islam. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the Sardarul Anbiya who opened the doors. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम नबियों के सरदार थे, उन्होंने रहमत के, जन्नत के 7 दरवाजों को खोला, और ये सब जिंदा जन्नत के दरवाजे हैं हमारे मजहब के अंदर। 7 नातिकीन, 7 आइमाए तायरीन। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते हम इस इल्म को समझेंगे ताकि हमें बहुत ही ज्यादा समझ और खुशी हासिल हो। थैंक यू। थैंक यू। याली मदद सर। याली मदद। सर, जैसे आप आज समझे ना हार्ट और माइंड के बारे में, तो 2 चीज पूछना है सर। जैसे बहुत बार डायलेमा आता है ना, तो हम बोलते कि दिमाग कुछ बोल रहा है और दिल कुछ बोल रहा। तो दिमाग को हम लेते कि माइंड है, और दिल तो मतलब जैसे आप बताए कि हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन रहता ही है, कभी लगता कि इमोशंस है, कभी लगता कि ध्यान है। तो ये जो है कि दिल अलग सोचता, दिमाग अलग, एक तो ये क्लैरिटी सर अगर आप दे तो। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि कभी भी ऐसा बोलते कि हार्ट इज द थ्रोन ऑफ गॉड, कि खुदा दिल पे मतलब दिल में समा जाता है, मोमन के दिल में। तो जब रूह की रूह इंटेलेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि इंटेलेक्ट है, तो ऐसा क्यों नहीं बोलते कि इंटेलेक्ट इज द थ्रोन ऑफ गॉड? तो ये तो कुछ जी, तो सबसे पहले मैं उर्दू में समझा देता हूं कि दिल का जो वर्ड है ना वो कल्ब है, कल्ब, और कल्ब कहते हैं अक्ल को। और एक्चुअली ये बात बच्चों के लिए सही है कि दिल में खुदा समा जाता है, बवर गोफे में खुदा समाता है। बवर गोफा समझते हैं ना, ये हजीरा कुस कहते हैं इसको अरबिक के अंदर, पर्शियन के अंदर हजीरा कुस, बवर गोफा। ऊपर इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने एक बैतुल ख्याल के फरमान में बोल देते वक्त फरमाया कि मैं आपको नूर का दीदार यहां दूंगा, अपनी अंगश्त मुबारक को यहाँ रखते हुए फरमाया।
कि मैं आपको दीदार यहां देने वाला हूं, यहां नहीं, यहां। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। हमारा जो लोअर कल्ब है, जिसको हम दिल कहते हैं, इंग्लिश में इमोशन कहते हैं, और हमारा हायर इंटेलेक्ट है, जिसको हम अक्ल कहते हैं। तो समझाना ये था कि ऊपर की अक्ल से सोचो, नीचे की अक्ल से नहीं। मीनिंग, think with the intellect, not with the emotion. But emotions are required, but thinking must come from the intellect, not from the heart, because the thoughts of the heart or the matter of the hearts are normally, I'm just using the word normally, इतने पायदार नहीं होते हैं। लेकिन जो काम अक्ल से की जाए वो पायदार होती है। अब समझ गए? तो खुदा दिल पर, वो दिल नहीं, ये दिल पर आके नहीं बैठता है, यहां पर बैठता है। ये इसका थ्रोन है, खुदा के बैठने की जगह ये है। क्योंकि कंफ्यूजन जो था, और अनफॉर्चुनेटली हमारे वो बुजुर्ग जो इल्म के अंदर मजबूत नहीं थे, उन्होंने इस बात को या तो सही तरह से दाइयों और पीरों से नहीं समझा, या हम गरीब लोग थे इल्म के अंदर, तो हमको समझाने के लिए अलग अलग करके समझाया। इमोशन को अलग समझाया, सोच विचार को अलग समझाया। हो सकता है ये हमारी गुर्बत की वजह से, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे थे। आप देखें, आज 1400 साल के बाद भी हम इस बात को नहीं समझ पाए हैं। 600-800 साल हो गए पीरों ने हमको समझाया, अभी भी हम पीरों के गिनानों को भी नहीं समझते हैं, इमामों के फरमान को भी नहीं समझते हैं। कहाँ समझेंगे कभी, जब हम दिल को ही नहीं समझते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा कसूर जो है वो हमारी लैंग्वेज का है, क्योंकि जहां से हम आए हैं ना, अगर ये सवाल किसी पर्शियन या अरेबिक स्पीकिंग को पूछे, ही वुड हैव नो क्वेश्चन, क्योंकि उनके वहां जो वर्ड है कल्ब, उसका मतलब अक्ल होता है, उसका मतलब ये दिल होता ही नहीं है उनके वहां। तो चूंकि हमारी लैंग्वेज जो थी ना, इंडो पाक के अंदर हमारे खोजा लैंग्वेज, कच्छी, सिंधी, गुजराती, हिंदी, वहां पर आकर ये मसला पैदा हुआ लैंग्वेज की वजह से। इंशाल्लाह, तो क्या ये आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया कि दोबारा से कुछ ऐड करने की जरूरत है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। याली मदद। जी, Can you repeat it in English, please? Thank you. I'm sorry, do you want me to repeat this in English? जी, जी. So my sister was asking that in the Quran and in our understanding, it is said that Allah's throne is the moment's heart. But from today's understanding, we understood the heart is not this organ in our body, but the qalb, the forehead, the throne of Allah, and the Bomar Gofa right here. How do we understand that? That's what she was saying. I was explaining to her that the word, the actual word in the knowledge, in the ilm was qalb. This question only came to our vocabulary and understanding because our language was not Persian or Arabic. In our Hindi, Gujarati, Sindhi and Kutchi language, it was hard to understand and differentiate between the heart
and the mind. But if you ask a Persian or Urdu or Arabic speaking person, you will never have this question, because with them the word qalb is very well understood. That Allah sits on his throne, not here, but here. Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salvatullah Alaihi, may our soul be sacrificed to that Imam, in one of the Baitul Qiyal session said that you will find my nur and my didar here. With his finger, he pointed to the forehead. This is the place where you will find my nur and you will have the didar. This is the place where I will come and sit. Thank you Our for your language, explanation. yes, our language, and unfortunately, some of our elder speakers also were not able to understand this due to the language constraint, or maybe they understood, they tried to make us understand, but we, Garib, due to the lack of knowledge, could not understand what they were trying to tell us. So I would place the blame entirely on ourselves. G. Thank you so much. Sir, we have a request from the friend if you could explain a little bit more on that reference we just shared in the chat, 81.8 and 81.9, about that girl buried alive. G. So in the Quranic ayat, remember the Quran is these words and the symbols. Allah uses allegories. So for the soul, the word is used that on that day, your soul will complain like a girl. Remember the example I gave that we have two women in our life, our soul and our world. We have completely ignored and buried the first one, our soul in ourselves. On the day of Qiyamah, if we have done that, our soul will complain as that girl, the first girl in our life, our soul, that what did I do to you for you to bury me and completely ignored me in your lifetime, in your body? It's easy ayat, it's not that hard ayat. कि क्या वजह हुई कि तुमने मुझे जिंदा अपने अंदर दफना दिया और कभी भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी. जी. So we have another question. I feel like you answered it, but I think friends wants to ask still. How do you concentrate on both the bowl and naqsh at the same time? In Ibadat, my heart concentration is on bowl, but my mind jumps to visualize the naqsh. So how exactly they come in rhythm? Where I should concentrate? My heart or my mind? Very easy answer. Very, very easy answer. Practice, practice, practice. I think that answers your question. Because you are, and you just said it in your question, if I heard you correctly, you are trying to do this in your 4 o'clock ibadat, and you are not able to concentrate. That's what you said, that's what I heard in your question. What you forgot, not one time, I'm sure, at least a couple of dozen times, we had shown and explained, and that comes in one single word, your answer: practice. Practice.
practice. And when do you practice? During daytime. G. So we have two questions from the same friend. If the universal intellect powers the universal soul, what powers the universal intellect? And the second question is, why does the Imam use the word heart instead of intellect in this Farman, which is in English? Okay. Let me rephrase this question. मेरे ख्याल में क्वेश्चन में कुछ खराबी है, तो मैं समझने की कोशिश करता हूं और सवाल को दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं with your permission. So I think you are trying to ask, how does supreme intellect, the universal intellect, influence the supreme soul, the universal soul? I think this is your question. I think this is what you're trying to ask, because otherwise the question is not a clear question. If that is your question, say something and then I will try to answer that. The question should be, how does universal intellect influence universal soul? So rephrase the question. If that is, then we will try to answer that. What was your second question, Kamlesh sir? So second question is, why does the Imam use the word heart instead of intellect in this Farman, which is in English? जी, क्योंकि जिस तरह से नाचीज ने कहा कि हार्ट आपके लिए आसान वर्ड है समझने के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी बहन ने भी कहा ना कि हमारे गिनानों में हमारे हर जगह पर मटेरियल के अंदर दिल का वर्ड यूज हुआ है, because that is the vocabulary we understand. Emotion plays, love plays a huge role initially in the love of the Imam. Heart plays a huge role in the influencing our emotion toward the Imam. तो देखा, इमाम का अल्फाज करेक्ट है, हमारी समझ करेक्ट नहीं है. The word Imam have used is absolutely correct. It is just our understanding was not able to reach that understanding. G. So the friend said, thanks for correcting my question. Please go ahead and answer. So that is correct. Okay. So सबसे पहले आप देखें कि हमारी पूरी जिंदगी के अंदर, and I will answer this in English also, okay? Don't worry. हमारी पूरी जिंदगी के अंदर हमको बार बार इल्म, नॉलेज और इंटेलेक्ट की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है. इमाम हाजिर जामा मौला बाबा at the Karachi University opening initial ये सेरेमनी के अंदर मौला बाबा फरमाते हैं कि it is the universal intellect which transcend and guide the human. ये अल्फाज कि ये अक्ल ही है कि जो हर चीज से बालातर भी है और हर चीज को यानी कि ह्यूमन को गाइड भी करती है. जब हर चीज उसके अंदर आ गई तो एक्चुअली हमारी जान की जान जो इंटेलेक्ट है, अगर वो ना हो और उसका इन्फ्लुएंस ना हो हमारी रूह के ऊपर, तो हमारी रूह बेगाना हो जाएंगी, बेगाना पागल हो जाएंगी, यानी कि सही तरह हरकत नहीं करेंगी. Let me give you an example of that. A person who has no intellect, no brain, or have a brain damage, he still have a soul, but is he able to move his body?
is he able to do anything of logic? Your answer would be, of course not. Why? He has a soul, he's still alive, he's in a coma, or somehow the brain was damaged, meaning the connection of the soul was discontinued from the intellect. It is the intellect which influences the soul. And without the intellect, the soul would not be able to do anything rational of the logic which matters in human life. अगर अक्ल का काम ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो रूह के ऊपर, तो कहते हैं कि खुदावंद ताला ने सबसे पहले अक्ल को बनाया, फिर अक्ल ने रूह को बनाया, अब वो रूह के अंदर रहकर काम करती है. It is said that Allah's first creation was intellect, and intellect created the souls, and now intellect works inside the soul. You cannot see the intellect is inside the soul. The रूह की जान अक्ल है. So अक्ल has full influence over the soul, but the soul has free will to listen to intellect or not listen to intellect. इंसान के ऊपर अक्ल है, लेकिन इंसान के पास फ्री विल है कि वो अपने अक्ल को सुनता है या नहीं सुनता है. But अक्ल has total influence over your soul. Without the akal, your soul will not be able to make any move. Any move. Look at the people in coma or the people with the brain damage. They still have the soul. How come they are not able to do anything? Because their intellect and influence of the akal is no longer there, connected. G. So we don't have any questions in the chat. या अली मदद सर. या अली मदद. मुझे क्वेश्चन था, इमाम का फरमान है ना कि you live in this world and your intellect lives in another world. तो intellect means soul तो नहीं, तो intellect soul की जान है, तो वो कैसे हो सकता है? मतलब इसका आंसर क्या है? जी, एक्चुअली ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है and it's really good question. Thank you for asking again. My sister is asking is in one of the Farman. Matter of fact, we started this English Farman. If you look at the very first English Bethel Care Farman we done on this line few months back, that was the Farman we started with, the very first Farman. And I enjoyed it. And whoever had brought our attention to that Farman, we should thank them for that. And all this series was due to that Farman. Your question, that we live in this intellect and our intellect, we live in this world and our intellect lives in another world. First, I'm going to take this line as a criticism. Second, I'm going to take this Farman as guidance. And the third, Imam is telling us to connect with your intellect on 3 stages. Let me try on 3 stages. First, this line as a criticism. Imam is saying, look at you, you are living in this world and your intellect is somewhere else other than with you on the other world. There was criticism. Second, he's guiding us. He said, why don't you think
Why don't you use your intellect? And why don't you live in this world with your intellect? Third, he is teaching us something. Always be connected with your intellect and do not live in this world without thinking, without your intellect. अब उर्दू के अंदर 3 दर्जात पर इस फरमान को हम समझेंगे, लेवल्स पर। पहले जो है ना, इमाम हमको क्रिटिसाइज करता है कि देखो अपने आप को, तुम तो इस दुनिया में रहते हो और तुम्हारी अकल और कहीं है। फिर हमको गाइड करता है, दिखाता है कि देखो तुम्हारी अकल तो है तुम्हारे पास, तो तुम इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। फिर हमको मोहब्बत से समझाता है, अपनी अक्ल के साथ इस दुनिया में जियो। See, this was hard Farman. I remember when someone brought this Farman. But in the ilm of the Imam, with the mercy of the Imam, the hardest concept, the hardest Farman, and this was hard Farman, becomes easy for us. It is due to intellect. The intellect which Imam has given us to use. Imam has guided us through the intellect. You know why? Because Imam himself is the universal intellect, and Imam himself is the universal soul, combinedly together. And he's guiding us on both levels of the intellect and the matter of the soul. Subhanallah. Thank you, Farzana, for asking again. I enjoyed it and I love this question. Thank you. Yali Madad, sir. Yali Madad. So I have a question. When the Quran says that the soul on that day is going to have a complaint against you, so are you referring to the you? Sorry, not you, the Quran, referring to you, referring to the intellect as the soul and intellect? And if that is so, when we die, is it the intellect and the soul? Is that 2 parts that go, or is it just one soul that goes? So it's a bit confusing there. It's not. It's very easy. Look at me again. Intellect inside the soul. So now what does go at the end? The soul. Soul. Where is intellect? With the soul. So is So our soul always living at the end? no. Is our Well, soul is living at the end? What do you mean no? The body dies when the soul and the soul Right. goes. So, because only reason your soul is living because the soul of the soul is there. So Because then soul of the soul is there. So in one of the, not one, in the many places Imam says, do not let your soul die. Find those Farman, where Imam says, don't make that mistake. Do not let your soul die. Meaning, do not detach your akal from your soul. G. So if somebody detaches that soul, which I'm assuming from the intellect, means the intellect becomes too worldly and material, right? So when one dies, what happens to that intellect if they have detached it from the soul? Oh, okay. That is a good question now. Now there's a good question and complete question. Here in this world, human have a free will to attach or detach, to let the intellect influence or not influence. But once your free will is no longer with you, meaning the day you die,
your free will is no longer. So attachment and detachment remains with your free will. Once you die, your intellect will complain. Your soul will complain. Why did you not influence me? Why did you not teach me? What was wrong with you? Why did you bury me alive? And the intellect will say, see, no one asked me the answer. What would the intellect reply at that day? I told you what soul will say. No one asked me the question, what would intellect answer? The intellect will say, I was always with you. Wasn't your Imam with you always? And you will say, yes, my Imam was with me. Well, then I was with you always, but your free will would not let me influence you, teach you, guide you. I gave you the Farman, I gave you the Farman. I came and I taught you, I taught you. I even sent people in your home to teach you. Why did you not listen to me? See, that is a complete conversation. Thank you, sir. I understand now. So actually, the soul will be complaining against itself then, because the soul itself did not do it. Right? Thank you. Okay. So, So, sorry. you know what we say in our, in our old days, I'm sure your mom and definitely my mom have said, "Tu pote કરે છે ને પછી પોતે રોવે છે." We heard, right? Our mother used to say, I told you not to do that. You did it and then you are crying that I'm hurt. પોતે કરે છે અને પોતે રોવે છે. That is exactly what my mother said. That on the day, you're going to cry because you were not listening to your intellect. जी. तो सर एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर हम फिर इबादत में जब हम करते आवाज नहीं आ रहा फरजाना. You got muted. हैं, रूह इबादत करती है, हमने रूह इबादत करती है, तो जब फरजाना रूह आपका आवाज कट अब गया था. इंटेलेक्ट मतलब इंटेलेक्ट करेगी या रूह करेगी? फरजाना आपका आवाज कट गया था. मैंने अच्छा पूरी बात नहीं सुनी आपकी. जी दोबारा से बोलना. हाँ, मेरा क्वेश्चन मतलब जब हम इबादत तो रूह करती है, तो जब इबादत में रूह को नूर के साथ एक होना होता है, यानी हमारे इसमें आजम को, तो उसमें इंटेलेक्ट का फिर क्या पार्ट है? तो लाइक इंटेलेक्ट तो इमाम की अकल ही हमारे पास भी है, तो फिर इंटेलेक्ट का इबादत में क्या ताल्लुक है रूह? इल्म वाली रूह दर्जा बदर्जा ऊपर जाती है. आपके सवाल का जवाब मिल गया. इल्म वाली रूह दर्जा बदर्जा ऊपर जाती है. The problem is, मसला सबसे बड़ा पता है क्या है? हमने इंटेलेक्ट को यहाँ रखा है, अपनी रूह को यहाँ रखा है. अब सवाल पूछें. जी हम वो समझ अकल इंटेलेक्ट हमारे अंदर ही है, लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसमें आजम मतलब हमको रूह को इबादत नहीं करती, यानी मेरे पास नहीं डिस्टर्बेंस से आवाज नहीं आ रही है. अच्छा सॉरी, आवाज कहीं और से आ रही है, मेरे पास नहीं है, किसी और का वो खुला होगा माइक्रोफोन. ओके, ट्राई अगेन. ओके मतलब तो फिर इबादत जब रूह करती है तो इंटेलेक्ट, यानी इंटेलेक्ट वो आप बोले ना इल्म वाली रूह, इंटेलेक्ट होगा तो इबादत अच्छे से कर सकेगी. फिर इबादत में हम इसमें आजम को मतलब इबादत में रूह और इसमें आजम और नूर का क्या कॉम्बिनेशन है कि मतलब किसको किसके पास जाना है? इमाम बोला ना कि ब्रिज विल कम टू एग्जिस्टेंस, तो इसमें बड़ा वो मतलब है कि रूह इबादत करती है. ख्याल में आप इस डिवीजन के अंदर कंफ्यूज हो गए हैं. अच्छा आप डिवीजन के अंदर आपने अकल को इधर रखा, रूह को इधर रखा, नूर को कहीं और रखा. यू आर कंफ्यूज इन डिवीजन. एक कड़ी जा रहा हूं, एक करी जानो.
तो आपका सवाल का जवाब आसान हो जाएगा. Don't divide. Don't divide. I think your confusion coming from division. I wish I had a blackboard over here. If I had a blackboard, I will show you all three in one. But I don't have a blackboard over here to show you. मतलब रू नूर इसमें आजम इंटेलेक्ट सब एक ही है. ऊपर के मकाम पर सब एक ही है जी, क्योंकि आपको एक वननेस में जाना है ना कि डिवीजन में जाना है. नहीं, जाना तो वननेस में, लेकिन जब तक हमारा जीव जो है रू नहीं बना है, जब तक तो मतलब ओके. अच्छा, अभी आपने 4 में डिवाइड किया. जीव रू नहीं बना है, रू नूर नहीं बना है. As long you stay in the division, you will stay confused. Confusion comes in division. अभी तो आपने 4 में इसको डिवाइड कर दिया, अभी क्या होगा? जी Sir, जी. sir, today's topic is very good, but one thing I confused that कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह says to बंदगी कि आप रात को 4 से 5 इबादत करें, दिन में आप इबादत नहीं कर सकते because your mind are divided to others. ठीक है, तो आपने कहा कि हम दिन रात इसका जाप जापे, तो I will confuse for this. ओके. मौला पापा से कल ही हमारे एक दोस्त ने नाचीज के साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर किया, क्योंकि हम ह्यूमन जो है ना, हम जो अपनी आसानी होती है ना उसको हम बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं. और आपने अच्छी तरह से इस फरमान को पकड़ लिया कि मौला पापा ने बोला दिन में इबादत नहीं करना, जबकि मौला पापा ने ये नहीं बोला था दिन में इबादत नहीं करना. मौला पापा ने बोला था दिन में आप बिजी होते हो, वो इबादत नहीं कर सकोगे. Yes, मौला sir. पापा को एक मुखी ने, जब मौला पापा एक बेतुल ख्याल के उसमें आए तो मुखी से पूछा, मुखी कोई सवाल है, कोई कंसर्न है, क्योंकि मुखी के दिल में एक बात थी. तो मुखी ने कहा कि मौला पापा कुछ हो सकता है ये इबादत के वक्त में 4 बजे उठा नहीं जाता है मौला पापा, कुछ हो सकता है, रियायत हो सकती है. तो मौला पापा ने हंसे पहले मौला पापा, उसको इंटरटेन किया, बहुत ही केका लगाकर हंस के पूछते हैं, अच्छा चलो कौन से वक्त में इबादत करेंगे, दोपहर को 12 बजे करें? तो मुखी बोलता है नहीं, दोपहर के 12 बजे तो मौला हम दुनिया का धंधा करते हैं, तो दिन में तो इबादत नहीं हो सकती है, क्योंकि हम तो धंधा करते हैं. तो मौला पापा ने दोबारा हंस के कहा, चलो ऐसा करते हैं रात को 12 बजे रखते हैं. तो मुखी ने बोला नहीं मौला, 12 बजे तो मुश्किल से सोने जाते हैं. फिर मौला ने सीरियसली कहा कि जो टाइम आपको इमाम ने दिया है वही टाइम इबादत के लिए दुरुस्त है. ठीक है, अब यह बात हो गई इबादत के लिए ये वक्त दुरुस्त है. एंड वी ऑल आर एग्रीड ऑन दिस वन पॉइंट. हम सब इस बात पर एग्री करते हैं कि इबादत के लिए 4 से 5 बेहतरीन वक्त है. अब नाचीज ने आपको क्या समझाया और इमाम ने आपको क्या समझाया, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं समझाता हूं. इमाम ने हमको ये समझाया कि दिन में भी अपने बोल को भूल नहीं जाना, उसको झांपते रहना. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि 4 बजे प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, 4 बजे तो परफॉर्मेंस का टाइम है, टेस्ट का टाइम है, इबादत करने का वक्त है. प्रैक्टिस कभी करेंगे, दिन में करेंगे, 24 घंटे करेंगे, 24 घंटे उसको याद करेंगे, 24 घंटे इसम को पढ़ेंगे ताकि वो इसम ऑटोमेटिक हो जाए, हमारे दिल पर चिस्पान हो जाए, हमारे नजरों के अंदर, सामने दिमाग के अंदर बैठ जाए. फिर जब हम 4 बजे के लिए उठेंगे, हम
और जैसा ही हम इबादत में बैठेंगे हमारा इसमें आज़म चलने लगेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। समझ गए आप? यस सर, हम ऐसा यानी करते हैं और ऐसा भी था कि जैसे बोला गया था तो दिन में भी रिकॉल करते हैं, ठीक है, एवरी टाइम कि कहीं भी जैसे किचन में या कहीं भी वर्क करते वक्त ड्यूरिंग रिकॉल था, लेकिन एक कंफ्यूजन था, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। थैंक यू सर। Very good. You know, my sister, I love questions. I never refuse any question. So I appreciate you asking, क्योंकि confused रहने से बेहतर है पूछ लेना. And I love it because this part of the session where I would like to know what are you thinking. I wanted to make sure that we are all on the same page. We are all on the same level of understanding. क्योंकि फरमान को ना समझकर फॉलो करना बहुत खतरनाक होता है। फरमान को समझकर ही इसको फॉलो करना होता है। जी याली मदद सर, या अली मदद। बहुत अच्छा समझाया जब, बहुत अच्छा समझाया। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर, आप जब इंटेलेक्ट बोलते हो तो इंटेलेक्ट मीन्स हाजिर इमाम के फरमान, इंटेलेक्ट यानी हाजिर इमाम के फरमान हुए, मौला की अकल। नाउ यू आर कंफ्यूजिंग मी। अच्छा चलो, सवाल है तो जवाब तो होना ही चाहिए। सो हु वाज दिस? फरीदा, राइट? यस। ओके ओके। और माय सिस्टर, इमाम के फरमान हिदायत है जो इंटेलेक्ट को जगाते हैं। इंटेलेक्ट दो मकामात पर है। आई विल कम इनटू द इंग्लिश फॉर माय इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड। इज अ गुड क्वेश्चन। चूंकि हमारी बहन ने उर्दू में सवाल पूछा है तो मैं पहले उर्दू में जवाब दे दूं। ओके, इंटेलेक्ट दो मकाम पर है और आई एम गोइंग टू शो यू दिस पेन ओवर हियर। यूनिवर्सल इंटेलेक्ट इमाम, लोअर इंटेलेक्ट ह्यूमन इंटेलेक्ट। इमाम मोमिन। लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये कनेक्टेड है। इमाम जब हमें यूनिवर्सल इंटेलेक्ट से फरमान करते हैं तो वो हिदायत आती है नीचे यहां पर, जहां पर हमारी अक्ले गरीजी लिख ले, अगर आपको लिखना है तो अक्ले गरीजी, लोअर इंटेलेक्ट इंग्लिश के अंदर, उसको कनेक्ट करती है। किससे कनेक्ट करती है? फरमान से, हिदायत से। ठीक है, इमाम यहां से फरमान भेजते हैं, हिदायत भेजते हैं, कनेक्ट करते हैं, समझाते हैं हमारी लोअर इंटेलेक्ट को, अक्ले गरीजी को। तो फरमान क्या हुआ? कनेक्शन, हिदायत, समझाना। So my sister was asking regarding the how do we understand, or is Farman is the intellect? Farman is the connection, hidayat, guidance between the universal intellect, the Imam, and the lower intellect, the Murid. जी यानी मदद अलवाया साहब, याली मदद। I wanted to, I'm confused here. We have our intellect in the gray matter of the brain, in the frontal lobe of the brain, where the intelligence lies, where we have our cognitive skills. So when we die, the brain is matter. With the body, the brain is part of the body. It will all deteriorate. So, Pachi, how can we say that that is intellect is part of the soul? It goes with the soul. You know, this is where I'm not understanding. Okay, because you have taken the intellect as a material thing, a solid thing,
But the intellect, and I will prove to you right here on this line, intellect is a matter of astral, not material. For example, and I'll give you a couple of examples and I will show to you right here on this line. I will demonstrate that to you in a minute. After we die, there will only be few hobbies that we would have. One is to do ibadat. Second, to learn ilm. And the third, to enjoy higher level of heavens or be torment or discomfort in the lower level of hell. You cannot enjoy or learn or understand the higher matter of heaven without intellect. Without intellect. Okay? So you need intellect because intellect is the soul of the soul, part of our soul, not a material organ of our body. So when our soul goes, our intellect within the soul, because the intellect is the soul of the soul, goes with it. Now, second, if our intellect was not there, let's say, for whatever physical things that we understand, and let's say we leave our intellect here, we leave our free will here. What do we leave here? Our free will we leave here. Intellect goes with the soul because it's a soul of the soul, goes with it. If there was no intellect, then with whom the question and answer would be done? Who will understand the question and who will answer the question? Because without the intellect, you will not be able to understand. The example of that is a person in the coma with a brain damage. Try to ask a question to a person in a coma. He will not be able to understand your question, nor he will answer your question. Correct? Last demonstration. So where are you, my sister? What part of world are you in? I'm from Kenya in Nairobi. Nairobi. Yes. Right now, close your eyes and think that you are in Dallas, Texas, right here in my home. Are you with me in Dallas, Texas right Yes. now? How did you do Yes. that? Your soul did not come over here. Your thought came over here. No, Your mind came over here. yes. Yes. You see that? Mind is not a Mhm. physical thing. Mind is an astral thing. Instantly, within the blink of an eye, with your mind, you were able to come into Dallas, into my home. That was your mind. Gee, such a great Thank questions you. today. What a beautiful questions. Gee, Yeah, sir. Yali Madad. I lost you a few pages or a few chapters back in that 5 minute or more than 5 minutes in Urdu when you did not come back in English. If there was something relevant that perhaps we should know, if I can ask you to cast Oh, your can you give me a hint? What was that? Not at all. It was in Urdu. You know me, sir. I can't. Right. Narmeen, do you remember? Can you give me a hint? I apologize. It was Farzana's question, I think. Okay, so Farzana was asking that in the Farman, in our understanding, the soul is separate and different than Nur, and the soul is separate and different than intellect. My answer to her was that do not divide
and I was showing her 1. That think of the soul, think of the intellect within the soul, and remember when Imam gives you the Isme Azam, the Noor comes with it. The issue comes, the confusion comes when we divide, when we think of the soul other than our intellect other than the Noor other than the Isme Azam other than the Imam other than the universal soul other than the universal intellect. As we understand more and more, as our soul rises step by step through the ilm, we will come to find out that it is all the one and the same. And I was quoting a Farman, Gnan, Tame ine ek kari jano. Only way you will be able to understand if you combine all of that in a one single number. I was saying, I wish I had a blackboard over here. I will show you 1, 1, 1, 1, and 1, all in one. Do not divide. When we divide, then confusion starts. Like, all this question, soul and mind, because we had divided them. When it was together, human and the soul, we had divided them. It was actually one. Imam and the Murid, we divided them. Actually, it was one. Universal intellect and universal soul combined together in one. G. याली मदद सर Yali Madad. सर एक क्वेश्चन नहीं है लेकिन कमेंट है तो ऐसा अभी ये लेवल पे हमारे लेवल पे हमारा पूरा फोकस हमें इसमें आजम पे करना चाहिए 1 यानी अभी टू राइट नाउ दैट इज ओके सर Absolutely. Absolutely, Gulzar. Isme Azam, let me show you what Isme Azam has, okay? Isme Azam has Imam's soul, universal soul. Isme Azam has Imam's intellect, universal intellect. Isme Azam has Imam's Noor, universal Noor. Also, because we are all one in Imam, wa kulli shayin, in the very Isme Azam we are included. Look at that one. 3 part, 1, 2, 3. See, 3 part, 1, 2, 3. But all in one. If we are at the level of understanding, and I hope we are at the level of understanding, that in one, everything is encompassed. Isme Azam is Imam, Imam is Isme Azam. Isme Azam is Noor, Imam is Noor. We are also encompassed in Imam, is all together in one. You see that? That is the beauty of the ilm and the understanding. I think we are running into overtime. So is there any one last comment or question? Then याली we मदद can सर stop. Yali Madad. जी सर तो फिर इससे ये समझ में आया कि आप जो बता रहे कि सोल ऑफ द सोल दैट इज द इसमें आजम Soul of the soul is intellect. Soul of the soul is Ismi Azam. Soul of the soul is Imam. Soul of the soul is the Noor. Combined in one. शुक्र थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू Put it together. As long as we divide, see, division was important when we were children. For children, milk is other than the food, food is other than the water. But as we grow up, total nutrition
is milk, food, and the water. That's the total nutrition. Just like that, when we were children, soul, noor, ibadat, isme azam, imam, alag, 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 alag. Now we are at such a level, hopefully at this level, hopefully, where we can bring everything as one. That is exactly the Gnan. Ek kari jano. That is the key word right there. Bring it closer, bring it together, bring it into the one single. Okay, Thank you sir. so much. Thank you so Thank you, much. thank you. और Yeah. सर एक Thank you everyone. सर एक शुक्र कमेंट अल्हम्दुलिल्लाह. जी सर. सर आपने जो भी सिखाया और आज आप जो बोले ना कि वो 7 days प्रैक्टिस करो, तो मेरे को मेरा एक खाली एक्सपीरियंस छोटा सा बोलना है कि जब से मैंने ये सीख के किया है, हम्बलनेस से बोल थोड़ा थोड़ा कर पा रही हूँ सर, लेकिन सिर्फ 4 से 5 की बंदगी में डिफरेंस नहीं होता है सर, पूरे दिन के वसवसे हल्लू हल्लू खत्म हो रहे हैं सर. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हो जाएगा. डर लगता है ना तो ये आप जो सिखाया ना वो याद आ जाता है. थैंक यू शुक्र सर, थैंक अल्हम्दुलिल्लाह. यू. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you for joining us. We'll see you at 1:30 tomorrow. We have another session with London in few hours. Thank you everyone. Yali Madad, Yali Madad. Maula Ali Madad. या अली मदद. Yali Yeah, Ali Madad, Madad. Yali Madad, Ali Madad, Yali sir. Madad, Yali Madad.